So very good evening all the participants. Today we will be discussing some of the case studies on this fresh start process. And I hope my screen is visible. Is it visible? Yes, sir. Okay. So, yes. Just a minute. Yes, Pradeep ji, please read this. Taste Bud was a restaurant located at leased premises in New Delhi. It had a great reputation, award-winning chefs, and tastefully designed interiors. Much of its business came from executive lunches and dinners. Following the opening of Heavens, another excellent restaurant in the nearby vicinity, trading losses were incurred by Taste Bud, and eventually the business became unsustainable. Efforts to either have the rent reduced or to sell the business were unsuccessful. Suppliers of food, beverages, and utilities were unpaid for supplies provided in the previous 45 to 60 days, amounting to rupees 90,000. These were rental arrears for 1 month, amounting to 50,000 towards landlord Mr. Deepak. Tastebud also had a secured bank. The bank indicated that it didn't wish to appoint a receiver file for insolvency as the accounts were regularly maintained. Tastebud was managed by Mr. Kapil, a sole proprietor. He employed a staff of 10 people, including chef, an assistant chef, 6 waiters, and 2 housekeeping staff. Salary bill of employee is 2,80,000 per month. The salaries due to these employees were unpaid in half since the past 4 months. The restaurant had utensils equipment worth rupees 50,000. Mr. Kapil has earned an income of rupees 50,000 during past 1 year. Mr. Kapil also has a court challan due of 10,000. He is having a matrimonial dispute with his wife, and court has awarded an interim maintenance of 2,000 per month to be paid to his wife. Yes. Based on the above facts, please answer the following Yes. question. So these are the facts of the case. Now, based on these facts, please tell me whether this person is eligible for fresh start or not. What is his income? Income कितना है मिस्टर कपिल? What is his income during past 1 year? 50,000. Yes. So 50,000 is okay. है ना? Next point is how much assets does he own? Aggregate assets. What is the value of his aggregate assets? 50,000. Utensils and equipment worth 50,000. Yes. So now whether these utensils and equipments, whether these will come under excluded assets or not? Unencumbered. Yeah, it will be exclude asset, I think. Another point is whether the concept of excluded assets applies to fresh start process or not. This is more important. Because here the condition is aggregate. So it does not distinguish between the excluded assets and normal assets. It says aggregate value of the assets. So aggregate value is exceeding 20,000 rupees. So please note that this is important for the purpose of insolvency or bankruptcy. If we see the definition of excluded assets, what it says: unencumbered tools, books, vehicles, and other equipment as are necessary to the debtor or bankrupt for his personal use or for the purpose of his employment, business, or vocation. So I've deliberately included this thing because these are the tools or equipment which are necessary for his business or vocation. But still, if we read section 80 subsection 2, it says aggregate value of the assets. So aggregate value of the assets here is 50,000 rupees, and aggregate value should not exceed 20,000 rupees.
Third point, qualifying debts. The aggregate value of the qualifying debts does not exceed 35,000 rupees. So what is the amount of qualifying debts here? First of all, it says suppliers of food, beverages and utilities were unpaid for supplies provided in the previous 45 to 60 days amounting to around 90,000. So whether it will be covered in qualifying debts or not? Yes, sir. Yes, Eh? sir. Qualifying debt. It will be covered. 90,000. Please read the definition of excluded debts. Yes, sir. What it says? Qualifying debt say qualifying debt does not include an excluded debt. A debt to the extent it is secured. Any debt which has been incurred 3 months prior to the date of making of application. So this debt was incurred 45 to 60 days. क्यों प्रदीप जी? Yes, sir. It doesn't include. So it will not come under qualifying debt. Qualifying debt. Clear है? Next point, rental arrears for 1 month amounting to 50,000. Whether this is qualifying debt? No, sir. This is No. also no. Right, है ना? क्योंकि देखना है, we have to see the debts incurred During 3 months prior to the. हाँ, incurred 3 months prior to the date of application. So any debt which was incurred 3 months prior to the date of application for it shall not be included in qualifying debt. ठीक है? So these two are excluded. 90,000 भी exclude हो गया और 50,000. Taste bud also had a secured creditor, secured bank. So whether this the loan which he has taken from this bank, whether it is covered under qualifying debt? No, sir. No, this is also not covered. ठीक है? Although they have not mentioned the amount also. Amount भी mention नहीं किया. He employed a staff of 10 people, including chef. Salary bill of employees is 2,80,000 per month. And salaries due to these employees were paid in half since the past 4 months. ठीक है? So debt contracted 3 months, they are already excluded. So only 1 month debt will be included. और 1 month में कितना बिल है? 2,80,000. 80,000. So 1 lakh 1 month का इसका कितना हो जाएगा? 1 Half. lakh. 1,40,000. 1,40,000. So 1,40,000 will be the qualifying debt here. है ना? Only this will be the qualifying debt. Yes, sir. अरे ये हो गया 50,000 we have seen. Now this court challan. So court challan, whether it is included in qualifying debt? No, sir. No, No, it sir. is also not included. And this maintenance per month to be paid to wife, No. this is also not included. This is personal expense. So now we have come at 3 figures. We have arrived at 3 figures. Number 1, income during past 1 year is 50,000. Qualifying debts 1,40,000. Half of the salary bill of 1 month. ठीक है? And assets 50,000. So 2 of the 3 conditions are not satisfied here. So whether he is eligible for fresh start? No, sir. No, he is not eligible. ठीक है? Whether taste bud can apply for fresh start process? No. Oh. So for answering this No. question, let us see what Mr. Kapil has. We have already discussed all these things. Utensils and equipments worth 50,000 to be included in aggregate value of assets. ठीक है? So they will be excluded only in case of insolvency or bankruptcy. But So for it's fresh breaching start, I think this 50,000 worth of equipment is breaching the second 2B, section 2B, where it is the agreed value of the asset of the debtor does not exceed 20,000. हाँ 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 हाँ
हाँ तो इसमें आ गया ना 50,000, उसका तो ज्यादा हो गया ना ये। Yes, yes. Income during past 1 year is okay. Debt incurred during past 3 months. Salary unpaid for past 3 months, 4,20,000. Salary unpaid since past 4 months is 5,60,000. Qualifying debt हो गया इसका 1,40,000. Secured loan from secure bank, it is not covered. Maintenance to be paid, not covered. है ना? So two of the three conditions are not satisfied, so is not eligible for fresh start process. Next question. ठीक है? Qualifying debts exceed 35,000. Aggregate value of assets exceed 20. Now presume that he is eligible. ठीक है? Okay. Presuming that his application is admitted. Suppose he is eligible. Then what are the liabilities from which he will not be discharged despite a discharge order issued by the adjudicating authority? So even if Yes. his income is low or his assets are low or his qualifying debts is low and he qualifies for this fresh start process, still he will not be discharged from which of the following? All of the above, sir. Yeah. Because secured loan उसका personal है, maintenance to wife is personal. Yeah, yeah. 3 month का जो debts है, that is not Hmm. included in the qualified debts. Right. So we have to see the definition of qualifying debt and excluded debt. Presuming application for fresh start is admitted and there are certain changes in the financial circumstances which makes him ineligible for fresh start process. Okay. So what are the options available? Suppose initially he was eligible and then there were certain changes in the financial circumstances which made him ineligible. Now what is the option available with him? Is looks like more relevant. Option A. Yes. So the application shall be filed by the resolution professional. And who will give this information to the resolution professional? Creditors. Data, sorry, data. Debtor. Right. For the purpose of calculating annual income, the period covered shall be 12 months preceding the admission, filing of application. it should be Yes. preceding the filing B. of the application. Yes, yes. Right. How the assets shall be valued. There is nothing written how the assets shall be valued. It says aggregate value. So whether it will be cost price, market value, fair market value, what will be the Any criteria? of them. I think the market. Yeah. Fair market value. A few months ago, an application for fresh start was made, but was withdrawn by Mr. Kapil before its admission. Can he avail the opportunity for fresh start process? Suppose a person made an application, but he withdrew it before it was admitted. Now, can he avail this opportunity? Yes, yes. Yes. It was The withdrawn answer is before the yes. admission. Yeah. Yes. Can any legal proceedings be initiated against Mr. Kapil once an application is admitted? No, sir. No. So no one, including secure bank, can initiate any legal proceeding during interim moratorium or moratorium Moratorium. period. Okay. Can any criminal proceedings be initiated? Suppose he committed a murder. So then, can He legal can. proceedings be initiated? Yes, Yes, sir. yes. Yes. It can. So where it is written? It says in respect of the debt, in respect of any debt. Section 85 talks of in respect of any debt, effect of admission, and interim moratorium also talks of in respect of the debt. So only legal action or legal proceedings in respect of any debt shall be stayed, not other legal proceedings. Okay? Son of Mr. Kapil is settled abroad and his marriage is due in the coming month. He has sent a ticket for his father because he is very close to his father. The application is still pending with the adjudicating authority. So application has not yet been admitted.
Can his father attend his marriage? Yes. The answer is yes, because the restriction which is given in 85(2)(f), it applies on admission of application. So prior to admission of application, there is no such restriction. During interim moratorium period, there is no restriction. But after the moratorium period, this is restricted. 85(2)(f). 85 3F हो जाएगा, 2F नहीं है, 3F है. दिस इज 85 3F. ठीक है जी, चलिए. बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल तो नहीं है. नहीं सर. नेक्स्ट देखिए. सन ऑफ, ये हो गया. अच्छा, सन ऑफ मिस्टर कपिल इज सेटल्ड अब्रॉड. वेदर एसेट्स ओन्ड बाय द सन बीइंग ए फैमिली मेंबर आर रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड व्हाइल फाइलिंग एन एप्लीकेशन? बिकॉज इज कवर्ड इन इमीडिएट फैमिली. नहीं सर. नो, सिंस द सन बीइंग इंडिपेंडेंट, लिखा ना सेटल्ड अब्रॉड, वो डायरेक्टली नहीं बोलेगा, इनडायरेक्टली बोलेगा, है ना. सेटल्ड अब्रॉड का मतलब ही इज हैविंग हिज एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस, जो कुछ भी है. तो ही इज इंडिपेंडेंट, ही इज नॉट डिपेंडेंट, सो इज नॉट कवर्ड अंडर डिपेंडेंट चिल्ड्रन. And details regarding assets has to be given for how much period? कितने पीरियड का देना है आपको डिटेल? 12 months. 12 months. 12 months तो नहीं है, मैंने तो देख शायद 2 years पढ़ा था कहीं. क्या प्रदीप जी? See section 81. Section 81, subsection 4, subsection D. The financial information of the debtor and his immediate family up to 2 2 years years. prior to the date of the application. ठीक है जी, तो 2 साल का डिटेल दे रहा है. नेक्स्ट. 2 years. What should be the answer? Suppose he is discharged from this liability. So whether he will be discharged from the interest also or not? This is the question. Yes, sir. So it covers not only penal interest but interest also. Interest, penalty, penal interest, everything is covered. Penalty is covered, interest including penal interest is covered, any other sums owed under any contract, this is also covered. So answer is yes, section 92, 3B. Interest including penal interest. Yes. By what time the RP should prepare a final list of qualifying debts? Because 7 days we all know. So 7 days में भी क्या, कौन सा होगा exactly? Please see section 92(1). At least, sir. 92(1) पढ़ लीजिए. अजय जी एक बार पढ़िए क्या लिखा है. B, sir. So- At least 7 days. The RP shall prepare a final list of qualifying debts and submit such list to the A at least 7 days before the moratorium period comes to end. हाँ, तो लिखा है एट लीस्ट, है ना. नेक्स्ट पढ़िए क्वेश्चन. अजय जी क्वेश्चन पढ़िए एक बार जरा. Suppose Mr. Ram is jointly liable with Mr. Kapil for the debts of the test bird restaurant. What shall be the effect of the discharge order issued by the discharge of Mr. Kapil? Both the persons who are liable shall be discharged. Only Mr. Kapil shall stand discharged. Any of the above. Only Mr. Kapil, right? Sir? Right.
So it is written in 92(6). It says a discharge order under subsection 2 shall not discharge any other person from any liability in respect of the qualifying debts. Okay. Next. Is the discharge order issued by the AA appealable? Yes or no? I think yes. आपको आंसर कहाँ मिलेगा इसका? For answer, you can go to section 179 and 181. 179 says adjudicating authority, and it says the DRT shall notwithstanding have jurisdiction to entertain or dispose of any suit or proceeding by or against the individual debtor, any claim, any question of priorities, or any other question, whether of law or fact. Right? And then 181 talks of appeal to DRT. There is nothing specifically mentioned here, but a creditor can appeal, because the debtor is discharged, so creditor may like to file an appeal. Right. Next case study. पढ़िए जरा एक बार. Jumru is a landless agricultural laborer living in a tiny village in Chamba district of Himachal. He had taken a secured loan of rupees 50,000 for Himachal Gramin Bank for construction of his house in February 22. However, the house was washed away in a flash flood in July 22. Jumru, in order to construct a shanty, took a loan of rupees 10,000 from the village money lender at the rate 5% per month. Jumru's wife has gold jewelry worth rupees 1 lakh, which was given to her by her parents. Jumru also has a goat and two hen worth rupees 15,000. In view of the above facts, please answer the following questions. अच्छा, सेम क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन है. जो लास्ट क्वेश्चन था उसी हिसाब से है ये भी. हाँ हाँ. Can Jumru avail the fresh start process? दोबारा देख लीजिए. एसेट्स कितने हैं इसके पास? व्हाट आर हिज एसेट्स? इसका एक गोट है और एक मतलब लिविंग स्टॉक है 15,000. हाँ ठीक है. और इनकम कितनी है? इनकम 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 तो कुछ लिखा नहीं है इसका. ठीक है. और इसकी क्वालिफाइंग वाइफ डेट्स के पास कितने हैं? ज्वेलरी है बट वो क्वालिफाइंग डेट्स में ये सॉरी एसेट्स में आएगा कि नहीं इनका देखना होगा. डिपेंडेंट. नहीं, उसके पास तो नहीं है ना ज्वेलरी. राइट. बट इफ से डिपेंडेंट वैसा कुछ था ना, सब कुछ डिपेंडेंट ऐसा नहीं था. हाँ नहीं वो तो है, बट आप सेक्शन 80 वाला कंडीशंस देख लीजिए ना. व्हाट आर द हम्म. कंडीशंस फॉर सेक्शन 80? सेक्शन 80 कंडीशंस इज ए डेटर मे अप्लाई इफ the aggregate value of the assets of the debtor does not exceed 20,000 rupees. डेटर का तो एसेट नहीं है ना ये. राइट राइट. तो क्वालिफाई करेगा. है ना. What remedy the money lender has in case Jumru does not pay? अब मनी लेंडर के पास क्या ऑप्शन है? क्योंकि मनी लेंडर से कितना लोन लिया इसने? 10,000. So 10,000 is the qualifying debt. यस. Because the secured loan is not a qualifying debt, है ना. Secured loan is excluded debt. So इसके पास क्या ऑप्शन रहेगा मनी लेंडर के पास? ए ऑप्शन. Let us see section 86 subsection 1 for this. What section 86 subsection 1 says? 86(1) says it gives the grounds. First is inclusion of a debt as a qualifying debt.
Second is incorrectness of the details of the qualifying debt specified in the order. So these are the two grounds. So the grounds also have been specified. भाई या तो ऐसा है कि क्वालिफाइंग डेट नहीं हो तब ऑब्जेक्शन करेगा, या फिर करेगा डिटेल्स ऑफ द क्वालिफाइंग डेट. So grounds are specified, so he cannot raise any objection. हिमाचल ग्रामीण बैंक क्या है? ये फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, शेड्यूल्ड बैंक है, क्या है ये? ये तीनों है। शेड्यूल बैंक तो नहीं है। शेड्यूल्ड पब्लिक। बैंक ही है. जितने भी ग्रामीण बैंक है ना, ये सारे शेड्यूल्ड बैंक में आते हैं. ओके। What is the amount of aggregate value of assets owned by Jumru for filing an application? 15,000 लिविंग स्टॉक जो उसके पास है। हाँ. What is the amount of qualifying debts owed by Jumru for filing an application? क्वालिफाइंग डेट कितना है इसका? अच्छा, उसमें इंटरेस्ट भी मेंशन था 5%, 10,000 जो उसने लोकली लिया था। हाँ, और 5% पर मंथ पे लिया उसने, हम्म। तो 10,000 प्लस इंटरेस्ट. कैन द इंटरेस्ट चार्ज बाय द प्राइवेट मनी लेंडर बी ट्रीटेड एज एक्सटॉर्शनेट ट्रांजैक्शन? नहीं तो भाई एग्रीड 5% है। पर मंथ है. Yeah. इट्स द एग्रीड कॉन्ट्रैक्ट, वो तो एग्रीड किया था, तो एक्सटॉर्शनेट तो नहीं होना चाहिए। ना प्लीज रीड सेक्शन इन 90 सबसेक्शन 2, एक बार पढ़ लीजिए, बिकॉज नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट Yeah, yeah. ट्रांजैक्शन. बट लेट अस रीड सेक्शन 90 सबसेक्शन 2. अजय जी पढ़िए एक बार जरा, सेक्शन 90 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? The RP may apply to the A for direction in relation to any other matter. But section 90 subsection 2, right? Or हाँ 92? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हो आप. The RP may apply to the A for the direction in relation to any other matter under the chapter for which no specific provision has been made. अच्छा। हम्म. भाई इसके बारे में स्पेसिफिकली तो बोलता नहीं, एक्सटॉर्शनरी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के बारे में. बैंक्रप्सी में तो बोलता है. हम्म। इन बैंक्रप्सी देयर इज अ सेक्शन, शायद 167 है शायद. वन सिक्सटी सेवन जो है ना, वो एक्सटॉर्शनरी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, बट वो बैंक्रप्सी से रिलेटेड है. यहाँ पर तो फ्रेश स्टार्ट में तो कुछ बोला नहीं, तो 92 में अप्लाई कर देगा अगर करना चाहेगा तो आरपी. और फिर जैसा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोलेगा कर ले. द प्राइवेट मनी लेंडर क्या है? ये जो प्राइवेट मनी लेंडर है, ये क्या है? भाई कैन ही बी कॉल्ड एज फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर? बोल सकते हैं क्या? बिकॉज फॉर, in order No, to sir. qualify as a financial service provider, he must be regulated by a financial sector regulator. है ना? This is the definition of financial service provider, which is given in section कितना, सेक्शन 3 में दिया, कहाँ दिया? 3, yeah. 3, sir. हाँ. तो इन सेक्शन 3 दे से कि फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर, हु इज फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर? फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर इज ए पर्सन engaged in the business of providing financial services in terms of authorization issued or registration granted by a financial sector regulator. जब वो प्राइवेट मनी लेंडर है तो वो तो है ही नहीं, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर तो है नहीं वो. सिक्योर्ड क्रेडिटर वो है नहीं, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है. ये एक बार देखें क्या है इसमें, क्या लिंक दिया हुआ. ये देखा आपने? कुछ पढ़ा है इसमें जो मैंने आपको ये शेयर किया था ग्रुप में? किसी ने पढ़ा है, नहीं पढ़ा ये केस स्टडी वगैरह? No, sir. अच्छा. अच्छा, ये भी एक टेस्ट है, तो ये टेस्ट आप दे सकते हो, है ना? ये टेस्ट आप, ये आपको टेस्ट खुल जाएगा 78 और 79 का. ठीक है जी. करना है क्या टेस्ट ये? सर कर लेंगे अलग से।
हाँ ठीक है, आप ये अलग से कर लीजिएगा। पता तो चल गया ना है क्या इसमें बीमारी, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें ये टेस्ट है, सो यू कैन गिव दिस टेस्ट। चलिए, नेक्स्ट केस स्टडी देखिए, पढ़िए। MM is a gym located at leased premises in Lajpat Nagar, New Delhi. Because of the competition and other issues, MM is facing financial difficulties, and it is not it's not हाँ able to meet its हाँ, liability. वो थोड़ा एंड इट इज नॉट एबल टू मीट ऐसे हो जाएगा, है ना। हाँ, Mhm. एंड इट इज नॉट एबल कर देते हैं इसको, वो थोड़ा सा इंग्लिश में ऐसा हो गया है, एबल टू मीट इट्स लाइबिलिटीज। ठीक है जी, चलिए, यस प्लीज। All the efforts to revive the business, cut the cost, or even sell the business were unsuccessful. Payment to equipment suppliers and maintenance agencies are due for supplies services provided in the previous 3 months, amounting to around 2 lakhs. ये qualifying में नहीं आएगा for. हम्म The rent for its premises remain unpaid for 3 months, amounting to 90,000 rupees, amounting to 19,000 rupees towards landlord Mr. D. The landlord had received advance rent for 3 months. Lease deed provided for 1 month rent as security and 1 month rent as advance. MM has loan account with XYZ Bank, which remains unpaid for last 2 months. The monthly EMI for the loan is rupees 1 lakh. MM has managed MM was managed by Mr. M as a sole proprietor. MM has employed 7 persons, including 3 trainers, 1 accountant, and 3 housekeeping staffs. The salaries due to these employees were paid in half since the past 4 months. The housekeeping staffs are covered under the definition of workmen. Mr. M made an application under Section 94 of the IBC 16 for initiating insolvency resolution of MM. The A admitted the application and appointed अच्छा me अच्छा as अच्छा, party. अरे ये तो उसमें ये बैंक्रप्सी की स्टडी हो जाएगी तो यार, ये केस स्टडी बैंक्रप्सी की, ये एग्जाम में तो उसमें थी ना, एग्जाम वो मॉडल टेस्ट पेपर में मैंने वहां से ले ली है, ये एक्चुअली बैंक्रप्सी की केस स्टडी है ये, है ना। पर चलो कुछ इसको डिस्कस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत तो इसमें है फ्रेश स्टार्ट के बारे में भी। हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन मैंने देखा ना फ्रेश स्टार्ट का, मैं सोचे फ्रेश स्टार्ट की स्टडी है, पर इट इज ए केस स्टडी ऑन बैंक्रप्सी, है ना। तो इसको छोड़ देते हैं, लेट अस लीव दिस केस स्टडी। तो दिस इज अ केस स्टडी ऑन बैंक्रप्सी। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस थे ना, हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए थे इसमें, वी हैड डन अप टू कितने, 10, कितना कर लिया था हमने क्वेश्चंस। 13, 14, 13 also completed. हाँ, 13 तक कर लिया हमने, है ना। Yeah. तो लेट अस कंप्लीट दीज क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हैं बिफोर वी स्टार्ट इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 14, तो पढ़ लीजिए एक बार क्वेश्चन नंबर 14। RP is fresh start order process cannot seek direction from the A for the following acts of the debtor. Alienation of the asset of the debtor, non-disclosure of material information is the application did by the debtor, travel outside India undertaken by the debtor, review of objection filed by creditors. I think A, option नहीं, A. ये कैसे होगा भाई, Mm, इफ द डेटर अलायंस इज असेट्स, सो नेचुरली ही विल मेक एन एप्लीकेशन, ही विल सीक द डायरेक्शंस ना। लेट अस सी द रिलेटेड सेक्शन, साथ साथ सेक्शन पढ़ लेते हैं ना तो ज्यादा क्लैरिटी आ जाती है।
First of all, let us try to find out the, I think it will be covered by section 90, है ना? Section 90, Directions to directions for compliance. compliances. It specifically refers to 85.3, and 85.3 talks of the various disqualifications, not acting as director, है ना? Not dispose of or alienate any of his assets. So this is specifically covered. Travel outside India also covered. Review of D, objections filed by creditors will not be covered here. D, sir. है ना? So D should be the answer. Next. RP in a fresh start order process cannot apply to the A for the revocation of a fresh start order in which of the following circumstances material changes since the date of application are not reported to him. Application not reported to him. Debtor has acted in a malified manner in non-compliance with the section, travel abroad and failed to return back. Too many objections from the creditor. RP in a fresh start order cannot apply to the authority for the revocation of fresh start order in which of the following conditions. So जो जिस मतलब जो applicable नहीं है. ये बेसिकली कह रहा है कि एप्लीकेशन हैज बीन एडमिटेड, नाउ द आरपी वांट्स टू अप्लाई फॉर रिवोकेशन ऑफ द ऑर्डर. सो व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस इन विच ही कैनॉट अप्लाई? भाई सपोज मटेरियल चेंजेस आर देयर, तो उसमें इसमें तो अप्लाई अप्लाई कर करेगा या सकते नहीं हैं. करेगा? द आंसर इज यस, Yes. है ना? तो लेट अस सी द रिलेटेड सेक्शन I फर्स्ट. think option D is the more D, sir. Too हाँ, many objections. सेक्शन 91 होगा. सेक्शन 91 is the governing section for this. So this question is based on section 91. So D should be the answer. Next, the logical sequence of events in a fresh start order is, क्या होगा? The logical sequence of event in a fresh start सबसे order पहला is क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, इस तरह से. application to AS of FSO final list of qualifying dates by RP discharge order. Application to A FSO discharge order. This is not the application to the A final list of qualifying dates by RP FSO and then discharge order. Application to the A discharge order FSO final list of qualifying dates by RP. I think C. भाई देखो, सबसे पहली बात क्या है, डिस्चार्ज ऑर्डर इज द लास्ट, Yes, sir. है ना? ARC. डिस्चार्ज ऑर्डर जो है दैट इज द लास्ट थिंग. और सबसे पहले क्या होगा? एप्लीकेशन होगा टू ए. ये बात तो क्लियर है. Yes. सेकंड में फ्रेश स्टार्ट ऑर्डर होगा, और उसके बाद में फिर वो फाइनल क्वालिफाइंग लिस्ट ऑफ. Okay. ये So आई थिंक ए शुड बी द आंसर, yes, yes. है ना? ए बनेगा इसका आंसर. ऑर्डर के बाद ही फाइनल लिस्ट वो बनाता है. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. नेक्स्ट, द डिस्चार्ज ऑर्डर फ्रॉम द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कैन डिस्चार्ज द डेटर फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन टू द डेट ऑफ डिस्चार्ज ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ द डेट्स. तो किससे वो डिस्चार्ज हो जाएगा? इंटरेस्ट, पेनल्टीज, other sums owed, interest, penalties, and other sums owed. D, sir. D. Yes. So D should be the answer. 17D. Next. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वो मुश्किल नहीं है. बट द की इज दैट यू गो टू द रिलेटेड प्रोविजन वंस अगेन. आपको फटाफट यू शुड बी एबल टू एटलीस्ट ओपन द रेलेवेंट सेक्शन. भाई अगर आपको समझ में आ गया सीक्वेंस, तो यू शुड बी, सेक्शन ही बहुत वेरी लिमिटेड सेक्शंस आर देयर, है ना? एक्सक्लूडेड डेट डज नॉट इंक्लूड. Credit card debt. Right. I think D should be the answer. Right. 19. Qualifying debts in case of insolvency and bankruptcy for individual and partners firm does not include. हाँ, पर देखिए दूसरों को आंसर करने दीजिए. अभी आप आंसर कर रहे हैं करेक्टली. एक बार लेट अस गिव अदर्स आल्सो अ चांस. भाई Qualifying और भी debt, बहुत सारे लोग बैठे हैं, आप भी ट्राई करिए सब लोग. 19 में क्या होगा? qualifying debt in case of insolvency and bankruptcy for individual and partnership firm does not include
an You excluded can debt open books also, no issues. Book open कर लो, क्या दिक्कत है? of debt to the to the extent secured, any debt which has been incurred 3 months prior to the date of application for fresh start process, liability to pay damages for negligence, nonsense, or breach of statutory, contractual, or other legal obligations. भाई आपको सेक्शन 79 देख लेना है, सेक्शन 79 सब सेक्शन 19 यही क्वालिफाइंग होगा। डेट्स। हाँ, डी शुड बी द आंसर। 20। Immediate family of the debtor in case of insolvency and bankruptcy for individual and partnership includes his brother, his son who is software engineer in a company, his dependent mother, his sister. सी। है जी। सी। हाँ, सी शुड बी द आंसर। डिपेंडेंट पेरेंट्स है ना, Hmm. तो सी है। अच्छा, ब्रदर सिस्टर इंक्लूडेड है कि नहीं है? Yes, नो। included. हाँ, Okay, आ रहा है कि नो। forms नो, includes. ब्रदर सिस्टर नहीं है। ब्रदर हाँ. सिस्टर नहीं है। डिपेंडेंट चिल्ड्रन, डिपेंडेंट पेरेंट्स, स्पाउस, इमीडिएट फैमिली में, हम्म. एसोसिएट में कवर्ड है, बट दोनों अलग अलग चीजें हैं, है ना? वेरी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। Which of the following statement is not correct with respect to the interim moratorium when an application is filed under fresh start process? Any legal action or legal proceedings pending in respect of any of his debts shall be deemed to have been stayed during interim moratorium period. No creditor shall initiate any legal action or proceedings in respect of such debt during interim moratorium period. XYZ bank XYZ file a case in the court for such debt owed by the debtor. And interim moratorium shall commence on the date of filing of said application in relation to the all debts. कौन सा करेक्ट नहीं है इसमें? हम्म हम्म सी। है जी। सी, XYZ बैंक फाइल्स अ केस इन द कोर्ट। नहीं कर सकते ना। बिल्कुल सही है, सी। Owed by हाँ, debtor. है ना भाई? पहले वाला करेक्ट है, दूसरे वाला भी करेक्ट है, तीसरे वाला इनकरेक्ट है ना? वो इनकरेक्ट पूछ रहा है, चौथे वाला भी करेक्ट है। 22, यस। The application for fresh start process shall not contain which of the following information: the interest payable on the debts and the rate thereof stipulated in the contract, a list of security held in respect of any of the debts, financial information of his brother and sisters to 2 years prior to the date of application, the reason for making the application. The सबसे पहले तो सेक्शन बताइए, C number, sir. कौन से सेक्शन में कवर होगा ये? इसके लिए आपको देखना कौन सा सेक्शन है। सेक्शन 81 सब सेक्शन 4। देखो, सबसे पहले आपको पढ़ने का तरीका यह है कि सेक्शन भी पता होना चाहिए, उससे दोबारा एक बार पढ़ लोगे और क्लैरिटी ज्यादा आ जाएगी। ठीक है, तो आ सी शुड बी द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 23। Interim moratorium period in case of fresh start order means an interim moratorium shall commence on the date of filing of application and shall cease at the end of 180 days. An interim moratorium shall commence on the date of filing of application and shall cease at the end of 90 days. An interim moratorium shall commence on the date of filing of application and shall cease to have effect on the date of admission or rejection of such application. An interim moratorium shall commence on date of admission of application and shall cease at the end of 180 days. Interim moratorium period in case of fresh start order means, okay.
आई थिंक ऑप्शन डी। है ऑप्शन डी। डी कैसे होगा भाई, ये इंटरिम सी मॉरिटोरियम है। सी सर, सी है सर। ये सी इज द करेक्ट ऑप्शन। भाई इंटरिम के बाद तो फिर मॉरिटोरियम लगेगा ना, तो इंटरिम मॉरिटोरियम तो एडमिशन होगा तब भी खत्म, रिजेक्शन होगा तब भी खत्म। ओके ओके। इंटरिम मॉरिटोरियम। फाइलिंग फाइलिंग के टाइम पे इसमें फाइलिंग में ही स्टार्ट हो जाता है हाँ, पिटिशन। इंटरिम का तो मतलब यही है ना। नेक्स्ट। When an application is filed under fresh start process by the debtor himself and not through RP, the A shall direct the board within how many days of receipt of application to the nominee resolution? 7 days है शायद। बिल्कुल सही है। तो नॉमिनेटेड रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कर देते हैं इसके आगे, है ना। ठीक। तो द आंसर विल बी बी, है ना। बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट। द बोर्ड शैल नॉमिनेट ए रेजोल्यूशन प्रोफेशनल विद इन 10, 14 क्या होगा। 14। 14 थोड़ी है सर जी। बोर्ड जहां तक भी है ना, ज्यादातर केसेस में 10 डेज है, एक्सेप्ट एट वन प्लेस। वो कौन सा सेक्शन है। एक ही जगह है जहां पर बोर्ड 7 डेज में रिवर्ट करेगा, वो है 97, सेक्शन 97 सब सेक्शन 2। सिर्फ पूरे आईबीसी में एक ही सेक्शन है जहां बोर्ड 7 डेज में रिवर्ट करता है, सेक्शन 97। अदरवाइज बोर्ड ऑलवेज रिवर्ट्स इन 10 डेज। एक बेसिक बात याद रख लो आप। ठीक है जी, चलिए। ये हो गया 25 का। ए शुड बी द आंसर। 26। ये क्या 26 कहाँ चला गया। 25 के बाद 30 आ गया, बीच वाले कहाँ चले गए। वो लगता है पेपर मिस हो गया, चलिए। एक लगता है मिस कर दिया बीच में। नेक्स्ट देखिए। Which of the following statement is correct with regards to the discharge order? हम्म It shall discharge the spouse and person from any liability in respect of the qualifying debts. It shall discharge the dependent parent and the person from any liability in respect of qualifying debts. It shall not discharge any other person from any liability in respect of the qualifying debts. It shall discharge the dependent child and the person from any liability in respect of the qualifying debt. I think C. हाँ, It सी shall शुड not बी। discharge हम्म any other person. यस। 31। The RP shall prepare a list, final list of qualifying debts and submit such list to AA authority यहाँ लिखना होगा सर। है। At हाँ submit to the हाँ, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कर देंगे, ठीक है। yes, ये उसी के अंदर ही ऐसे दिखा हुआ है, ऐसा लगता है मुझे को। अथॉरिटी। हाँ जी। at least how many days before the end of the moratorium period? 10, 7, 30 or 14? ये तो अभी पढ़ा था हमने। Hmm. अभी तो पढ़ा था 92 जो पढ़ा था आपने सेक्शन। अजय जी, आप ही ने तो पढ़ा था सेक्शन 92। At least 7 days सर। 7 days. राइट, 7 डेज इज द करेक्ट आंसर, बी। अच्छा, अब इसके बीच वाले क्वेश्चन रह गए, वो भी देख लेते हैं, वो कहाँ है। एक पेज मिसिंग है बीच में से, है ना। हाँ, ठीक है। 42 के बाद, ठीक है। ये वाला पेज मिसिंग है इसमें, 63, है ना। 63, ये वाला पेज मिसिंग।
ये यहाँ ले आया। ठीक है जी। मैं कहा इसको भी कर ही दे, फिर रह जाएगा बाद में, नहीं तो ये। तो ये दो चार क्वेश्चन रह गए, इसको भी कर ही लेते हैं। चलिए 26, क्वेश्चन नंबर 26। The RP cell examine the application made under fresh start process within how many days of his appointment and submit a report to the authority, adjudicating authority. 14 days. ना? क्या जी, क्या आंसर है? एनीबडी अदर देन प्रदीप जी? प्रदीप जी के अलावा कोई भी बोलिए। प्रदीप जी को तो पता ही है आंसर। यस। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी द सेक्शन। सेक्शन कितना होगा? सेक्शन तो बताइए। 83. 83, 83 वन। 10 days, 10 days. हाँ 83 वन 10 days, ठीक है, सिंपल है। तो 26 का डी हो गया। 27। The RP cell reject the application made under fresh start process on which of the following reasons? The debts disclosed in the application by the debtor are qualifying debts. The debtor has made correct representation in the application and with respect to the documents or information submitted. A fresh start process, insolvency resolution process, or bankruptcy process subsisting against the debtor. The debtor is not an undischarged bankrupt. C. राइट, सो सी शुड बी द आंसर। 28। The RP may apply to whom for direction in relation to any other matter under the fresh start process for which no specific provision has been made. IBBI, Educating Authority, IPA in which he is member, Appellant अभी Authority. मैंने क्वेश्चन पूछा था ना एक, हम्म जो क्वेश्चन पूछा था एक्सटॉर्शनेट वाला। एक्सटॉर्शनेट में मैंने कहा था ना भाई, एक सेक्शन है उसमें, सेक्शन 90 सब सेक्शन 2 था मेरे ख्याल से, है ना? जिसमें मैंने कहा था भाई एक्सटॉर्शनेट के लिए क्या करेगा वो। हम्म अथॉरिटी, एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और क्या। सेक्शन 90 सब सेक्शन 2। तो सेक्शन 28 का हो गया बी। 29। the discharge order shall be forwarded to whom for the purpose of recording and entry in the register. IBBI, AA, IPNB is a member of the appellate authority. IBBI? राइट, अभी भी यही है। ये शुड बी द आंसर। ये होगा आपका सेक्शन 92 सब सेक्शन 5। तो 29 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो ऑल दीज आंसर्स आर ऑल्सो अवेलेबल हियर। ये आंसर्स भी दे रखे हैं हम, ये आंसर्स है। ठीक है जी, तो आंसर से मिला लीजिएगा एक बारी। बस जो ऊपर नीचे हो गए थोड़े से, 31 बस, ठीक ठीक है ना। चलिए, ये पीरियड स्पेसिफाइड है, ये भी आप देख सकते हैं। उसके बाद में इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी है। तो बिफोर वी स्टार्ट इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी, लेट अस सी द सेक्शंस रिलेटेड टू इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी। एक मिनट, ये है, ये फ्रेश स्टार्ट वाला हो गया। नाउ दिस इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी। इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी आपका एक स्लाइड में कवर्ड है पूरा। इफ यू आर एबल टू रिमेंबर दिस स्लाइड, मतलब आपके सारे सेक्शन कवर हो जाएंगे। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, फिर इसको केस स्टडी के थ्रू कवर करने की कोशिश करेंगे, है ना। सो टुडे वी विल कंसंट्रेट ऑन दिस स्लाइड विच रिलेट्स टू इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी। एंड देन ये बैंक्रप्सी है अगले वाला, इसका ये बैंक्रप्सी है। बैंक्रप्सी के लिए दो स्लाइड्स हैं बेसिकली। फिर ये है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, और ये ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। ठीक है, तो इंसॉल्वेंसी। नाउ बिफोर वी मूव टू दिस स्लाइड, लेट मी
tell you something about this individual insolvency. Suppose a person is not able to pay his debts. The default amount, as we all know, is 1000 rupees. है ना? But central government, by way of notification, may increase it to up to 1 lakh. Beyond 1 lakh, they have to amend the act. So section 94 says the debtor, or here there is no concept. दो चार चीजें अपने को ध्यान में रखनी है before we start studying individual insolvency. Here we are dealing with an individual or we are dealing with a partnership. ठीक है? अच्छा ये बताइए कि सपोज देयर इज ए पार्टनरशिप फर्म एंड ए कंपनी इज ए पार्टनर इन दैट पार्टनरशिप फर्म. कंपनी भी पार्टनर हो सकती है कि नहीं, पहले तो ये बताइए. यस सर, हो सकती Yes, है. sir. है ना? सो कंपनी कैन ऑल्सो बी ए पार्टनर. सपोज देयर इज ए पार्टनरशिप फर्म and in one of the partners is a company, and now partnership firm is not paying the debts and the creditor wants to move against the company. So whether he will move an application in part 2 or part 3? I hope you have understood my question. Part, यस यस. है सो ना? पार्ट 3 ओनली. 3 में कैसे जाएगा? part 2, sir. Corporate insolvency. कॉर्पोरेट गारंटर first- है ना वो. Corporate person. ही इज नॉट एन इंडिविजुअल गारंटर, ही इज ए कॉर्पोरेट गारंटर. ओके. तो Corporate कॉर्पोरेट guarantor, गारंटर का एप्लीकेशन कहाँ लगेगा? पार्ट 2 में. इफ इज एन इंडिविजुअल गारंटर, if is an individual or a partnership firm, then only proceedings can be started in part 3, otherwise in part 2. part 2 में जाएगा वो गारंटर के अगेंस्ट भी एप्लीकेशन. This question came in the examination. Section 94. So section पढ़ने से पहले और कुछ कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं. First of all, we are dealing with individuals and partnership firms. So there is no concept of resolution here. There is a concept of repayment plan. And because bankruptcy is a blot on the reputation of a person, so they want to give him an opportunity to repay the debts. Suppose he is not able to repay, बोलेगा भाई चाहे लोन ले आओ कहीं से, अपने रिश्तेदारों से मांग लो, कुछ भी कर लो, है कि नहीं? तो लेकिन if you don't want bankruptcy, then you have to repay, or you have to say you can restructure your debt. That much freedom the adjudicating authority will allow. That okay, you restructure your debt, but that also should be subject to approval by creditors. By creditor तो मानना चाहिए ना. If the creditors do not agree to what the debtor is saying, in that case they can file for bankruptcy. But in bankruptcy also they allow a period of 3 months within which they can file for bankruptcy. तो वहां पर भी एक चांस दे दिया to this individual or partnership firm to repay कि भाई bankruptcy तो नहीं start हो ना, है ना? Another important concept, there is no distinction between financial creditor and operational creditor here. So it is creditor and debtor, and both debtor and creditor can file the application. In case of part 2, we have seen that financial creditors can file the application jointly, but operational creditor cannot file the application jointly. But here, since there is no distinction between financial creditor and operational creditor, so creditors can also file jointly, even if he is an operational creditor, because there is no distinction, only creditor and debtor. दो ही कॉन्सेप्ट है, फाइनेंशियल और ऑपरेशनल कुछ नहीं. ठीक है? And this application, just like fresh start, can be filed only for the qualifying debts. Excluded debt से छुटकारा नहीं है, वो देने ही पड़ेंगे. बाकी तो फिर इसके प्रोविजंस हैं इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी के. लेट अस सी दीज प्रोविजंस वन बाय वन. सेक्शन 94. व्हाट सेक्शन 94 से? देयर आर टू सेक्शंस बेसिकली, 94 एंड 95. 94 बोलता है कि डेटर कैन अप्लाई टू स्टार्ट द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस. नाउ दिस डेटर मीन्स द पर्सन हु हैज टेकन द लोन और हु हैज कमिटेड द डिफॉल्ट. अभी हमारे
प्रोविजंस कौन से नोटिफाई हुए? रूल्स एंड रेगुलेशंस हैव बीन नोटिफाइड ओनली फॉर पर्सनल गारंटर्स. सो डेटर हियर मींस द पर्सनल गारंटर. ठीक है. So debtor can apply to start this insolvency resolution process. In case of partnership firm, majority of the partners have to apply. ठीक है. It should not be undergoing any other processes, and he can apply only for the qualifying debts. Section 94 इतना ही है. Section 94 में क्या क्या conditions हैं? Debtor can apply. In case of partnership firm, majority of the partners have to apply. It should not be undergoing any other process like fast track, fresh start, etc., etc. है ना? Fresh start नहीं होना चाहिए या और bankruptcy नहीं होनी चाहिए, ये सब. And only for qualifying debts he can. 94, 95. 95 says creditor. He can also apply singly or jointly. He can apply to A. और ये क्या लगाना पड़ेगा इसको? Proof of demand. So first of all, इसको डिमांड नोटिस देना पड़ेगा क्रेडिटर को. Like in CIRP, कितना नोटिस? What is the period of demand notice in CIRP in part 2? 10 days. 10 days. Here it is 14 days. So proof of demand and non-payment, then details of the debt and failure to pay within 14 days. So all these things he has to attach along with the application. What is the fees? Fees कितना है? Fees is given in application to adjudicating authority rules. Can anybody tell me the fees? Fees कितना है? 2500. Yes, 2500 is the fees. ठीक है. 96. So here also there is a concept of interim moratorium and moratorium, just like in case of fresh start. अभी हमने fresh start पढ़ा. In fresh start also there is a concept of interim moratorium and moratorium. Same edito. ठीक है. Interim moratorium section 96. So it commences on the date of filing of the application and no other actions are allowed. 97. So here also 94 and 95, the application by the debtor or creditor can be filed by themselves. They themselves can file the application. No need of RP. So if they file the application on their own, so then 97 says, if the application has been filed through RP, adjudicating authority will seek the confirmation from the board. और यहीं पर this is the only section 97(2) जहां पर 7 days है and board will also revert within 7 days. Otherwise board is allowed to revert within 10 days in all the sections except this section. ठीक है. And if there is no RP, then adjudicating authority shall apply to the board and board will revert within 10 days. ठीक है. 98. Creditor or debtor can seek change in RP, just like in case of fresh start. अभी पढ़ा ना हमने fresh start में. यहां पर भी वही है कि creditor or debtor can seek change in and adjudicating authority will refer to board within 10 days and board will recommend within 10 days. ठीक. 99. RP will recommend the acceptance. यहां पर जैसे वहां रिपोर्ट है. In fresh start also we have seen the concept of report. Here also there is a concept of report. So RP will recommend the acceptance or rejection of the application within 10 days and he can seek all information and there can be no dispute on the information utility information. So if a debt is registered with information utility, then there can not be any dispute regarding that debt. Okay. Section 100. So why I have marked in red? Because this section 100, section 115 and section 118, they take you to bankruptcy. So section 100 says within 14 days of the adjudicating, within 14 days of the report by the RP, A will accept or reject the application. But if the application has been moved with the intent to defraud either the RP or the creditor, then the creditor can straight away file for bankruptcy. Section 100. 100 वैसे भी डेंजरस सेक्शन है, पुलिस का होता है ना? तो सेक्शन ऐसे भी याद रहेगा 100 आपको. 101 क्या है? ऑन एक्सेप्टेंस मोरेटोरियम ऑफ 180 days will start. फ्रेश स्टार्ट में कितना मोरेटोरियम है? 180 days. प्री पैक में कितना है? प्री पैक में मोरेटोरियम कितना है? प्री पैक में 120 है. 120, yes sir. ऐसे ऐसे आपको अपने आप से क्वेश्चन करते रहना है.
है ना। एक प्रोसेस पढ़ोगे आप 4 साथ में रिवाइज करते रहो। 102, adjudicating authority shall issue public notice within 7 days of the acceptance, and it will invite claims from all creditors within 21 days of the notice. ठीक है, no format of public announcement is there, so the RP can use any format. 103, section 103 says creditors to provide all details of debts to RP along with all other required details. Section 104, RP shall prepare the list of creditors with details within 30 days of the notice period. ठीक है. 105, debtor to prepare the repayment plan. So debtor here will prepare the repayment plan with RP, in consultation with RP, but that should have justification कि भाई genuine होना चाहिए, ऐसे नहीं हवाबाजी. And RP will have the authority to manage all assets and operations. There is no concept of custody and control here. By you are dealing with an individual, you are not dealing with a entity. वहां पार्ट 2 में है ना कस्टडी एंड कंट्रोल, यहां कोई कस्टडी एंड कंट्रोल वाला फंडा नहीं है. सेक्शन 106, section 106 says RP shall submit the repayment plan within 21 days of the creditor's submission, है ना, and it will ensure that it is compliant and will have creditors meeting, and he will have to provide reasons if he considers that meeting is not required. ठीक है. Section 107, creditors meeting. For convening a meeting of the creditors, notice of 14 days is required. ठीक है. And the notice of meeting shall consider the details of the repayment plan, proxy forms, etc. 108, creditors have to approve the plan, and RP should get the debtor consent to any changes suggested by the creditors, because debtor has to agree. Unless the debtor agrees, there cannot be any acceptance. 109, creditors entitled to vote in meeting in proportion to their voting share. Section 110, if secured creditor joins, so secured creditor has got two options here. Secured creditor can straight away opt to realize his security, or he can relinquish his security, just like in case of secured creditor in CIRP process. Similarly here, ठीक है. So if secured creditor joins, then he forfeits his right to enforce the security, and if he is not participating, he should inform the RP of the details of his debt. Section 111, a repayment plan has to be approved by more than 3/4 of creditors in value. Please remember, it is more than 3/4. It is not even 75, more than 3/4. ठीक है. Exactly 75 होगा तो भी नहीं अप्रूव होगा, more than 3/4 लिखा है. 112, RP to prepare detailed report of each creditors committee meeting. 113, copy of the report to be provided to debtor and all creditors, including those absent and adjudicating authority. Section 114, adjudicating authority may approve the repayment plan based on the RP recommendation and its examination. Then another section 115, red mark, because here bankruptcy may be initiated. Adjudicating authority approval starts the repayment plan. So adjudicating authority, once it approves the repayment plan, then, but if there is a rejection, so it entitles the debtor and creditor to file for bankruptcy. ठीक है. So section 115. So if the creditors reject the repayment plan, then the debtor or the creditor both can file for bankruptcy. ठीक है. In section 100, only creditor is allowed to file for bankruptcy. क्योंकि वहां पर क्या हुआ, वहां एप्लीकेशन लगाया और इंसॉल्वेंसी प्रोसेस हुआ ही नहीं पूरा, वहीं पर ही क्रेडिटर को बोल दिया, बिकॉज द डेटर इज ट्राइंग टू एक्ट इन ए फ्रॉडुलेंट मैनर एंड इज ट्राइंग टू डिफ्रॉड आइदर द आरपी और द क्रेडिटर्स. ठीक है. सेक्शन 116, RP to supervise the implementation of the repayment plan. 117, RP will provide notice of repayment completion within 14 days and provide detailed report with summary of receipts and payments. 118, plan started but it ended prematurely. Repayment plan start हुआ, उसने बोला मैं 2 साल में दे दूंगा, but it ended prematurely. If not fully implemented, RP will report the details and debtor and creditor can apply for bankruptcy order. This is the third situation. First situation, debtor is acting fraudulently. Second situation,
repayment plan is rejected. Third situation, repayment plan approved, but it ends prematurely. है ना? It was not fully implemented. So then also debtor or creditor can file for bankruptcy. Section 119, discharge order on recommendation of RP by A. So here also RP will recommend for discharge order, and based on his recommendation, adjudicating authority will issue a discharge order. And this discharge order will be only for qualifying debts, not for all the debts. एंड सेक्शन 120 सेज, सेक्शन 120 कितना है? जैसे हमारा सेक्शन यहां पर 93 देखा था ना हमने, 93 जैसा ही है कि आरपी टू परफॉर्म ऑल ड्यूटीज एज पर दी कोड ऑफ कंडक्ट. तो यही है हमारा इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस इन ब्रीफ. ठीक है, एक ही पेज में हमने पूरा का पूरा प्रोसेस स्टडी कर लिया. अब हमें क्या क्या बातें समझ में आ गई इससे? हमें यह समझ में आ गया कि देयर इज ए रीपेमेंट प्लान and creditors have to agree to that repayment plan with more than 3/4 majority. The rights of secured creditor are different. He may either opt to realize his security or he may opt to relinquish the security. In case he opts to relinquish, then he can join the creditors meeting and he can vote also. Otherwise, he will be entitled to vote only for the unsecured part of the debt. Filing for bankruptcy can be under three sections. Section 100 in case of fraud by debtor, Section 115 on rejection of the repayment plan, and Section 118 when the repayment plan is not fully implemented and it ends prematurely. Okay. There is a concept of interim moratorium and moratorium just like fresh start. Okay. And there is only one section in which the board has to revert within 7 days, section 97. बाकी सब जगह 10 days. He will be discharged only from the qualifying debts. ये है हमारा इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस इन ब्रीफ. ये तो हमने कर ही लिया फ्रेश स्टार्ट वाला. Now regarding restrictions. Regarding restrictions also, what are the restrictions? During insolvency, there is no restriction. During insolvency, there is no restriction. The restriction is during bankruptcy only. क्योंकि in case of insolvency, there is a probability that he might pay. तो insolvency जब start होती है तो उसमें कोई restriction नहीं है. bankruptcy के टाइम में restrictions. तो ऐसा करेंगे, एक बार क्विकली इसके रूल्स और रेगुलेशंस भी देख लेंगे, है ना. सेक्शन तो हमने मोटा मोटा देख लिया. तो उससे क्या होगा, एक तो एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रूल्स थोड़ा सा देख लेते हैं. ये तो हमने कर ही लिया, ये तो सब पढ़ लिए, है ना. सेक्शन 94 ये सब मैंने आपको रिवाइज करा दिया. सेक्शन 9 अब आप पढ़ोगे ना आराम से समझ में आ जाएगा आपको. एक बार आप दोबारा पढ़ना, पूरा समझ में आ जाएगा. अब हम क्या करते हैं, एक बार इसके रूल्स पढ़ लेते हैं. ये तो रेगुलेशंस हैं, रूल्स पढ़ लेते हैं कि एप्लीकेशन ये है आपके. एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन ऑफ पर्सनल गारंटर्स. ठीक है, ये देखिए एक बार रूल्स पढ़ लेते हैं थोड़े से, फिर रेगुलेशंस पढ़ लेंगे और फिर केस स्टडीज कर लेंगे. सेक्शन आप अपने आप पढ़ना, सेक्शन मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया. रिलेटिव्स क्या है? रिलेटिव आपका सेक्शन 79 सब सेक्शन 2. एक्सक्लूडेड एसेट्स ये हमने पढ़ लिया. एक्सक्लूडेड एसेट्स में क्या लिखा है? ये वैल्यू ऑफ अनएनकम्बर्ड पर्सनल ऑर्नामेंट्स शेल नॉट एक्सीड 1 लाख रुपीज. ठीक है. वैल्यू ऑफ अनएनकम्बर्ड सिंगल ड्वेलिंग यूनिट in case of urban area it is 20 lakh rupees, in case of rural area it is 10 lakh rupees. ठीक है. Application by guarantor, application shall be submitted in form A along with the application of 2000 rupees.
ठीक है। तो प्रदीप जी एप्लीकेशन फीस 2000 है Okay. Okay. है ना। एंड द गारंटर शेल serve forth with a copy of the application to every financial creditor and the corporate debtor for whom the guarantor is a personal guarantor. एप्लीकेशन बाय क्रेडिटर, एप्लीकेशन बाय क्रेडिटर में क्या है, डिमांड नोटिस देना है आपको। डिमांड नोटिस के लिए क्या है, फॉर्म बी है, और एप्लीकेशन आपको सबमिट करनी है फॉर्म सी में, along with a fees of 2000 rupees. And the creditor shall serve forth with a copy of the application to the guarantor and the corporate debtor for whom the guarantor is a personal guarantor. ठीक है। In case of joint application, there is a concept of nominational here. So creditors may nominate one among themselves to act on behalf of all the creditors. ठीक है। Confirmation or nomination of insolvency professional. So board may share the database of the insolvency professionals. ठीक है। बोर्ड क्या करता है, बोर्ड शेयर्स इन डेटाबेस और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी वहीं से अपॉइंट कर सकती है। ठीक है। कॉपी ऑफ एप्लीकेशन, the applicant shall provide a copy of the application filed under section 94 or 95 as the case may be, if not provided earlier, to the RP within 3 days of his appointment, because there could be a situation where the application has been moved directly by the debtor or creditor. So in that case, once the application is admitted, once he is appointed, so he will, the debtor or the applicant shall provide a copy to the RP within 3 days of his appointment. ठीक है। एंड टू द बोर्ड फॉर इट्स रिकॉर्ड। फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन, विड्रॉल, विड्रॉल हो सकता है क्या, यस, द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में परमिट विड्रॉल ऑफ द एप्लीकेशन बिफोर इट्स एडमिशन ऑन अ रिक्वेस्ट मेड बाय द एप्लीकेंट, और आफ्टर इट्स एडमिशन क्या होगा, ऑन द रिक्वेस्ट मेड बाय द एप्लीकेंट इफ 90% ऑफ द क्रेडिटर्स एग्री टू सच विड्रॉल। ठीक है। तो 90% ऑफ क्रेडिटर्स लिखा है, वो क्रेडिटर का मतलब वो इन वैल्यू ही है, कोई वो नहीं। एन एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल, इसके लिए कौन सा फॉर्म है, फॉर्म डी। 4 फॉर्म है, आपके रूल्स खत्म। ठीक है। तो फॉर्म ए कौन सा हुआ, फॉर्म ए में किसने अप्लाई किया, गारंटर ने। फॉर्म फॉर्म बी क्या है, डिमांड नोटिस। फॉर्म सी क्या है, एप्लीकेशन बाय क्रेडिटर। और फॉर्म डी क्या है, विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन। ये सारे फॉर्म दे रखे हैं फिर अब। ठीक है, ए बी सी और all these details are required. एक बार थोड़े रेगुलेशंस भी देख लेते हैं। ये तो रूल्स देख लिए हमने, अब इसके रेगुलेशंस देख लेते हैं। ये रेगुलेशंस है, रेगुलेशन क्या है, थोड़े से रेगुलेशन भी देख, अभी टाइम है ना। So it's over, sir. ठीक है, कोई बात नहीं। तो चलो कुछ तो समझ में आ गया ना, है कि नहीं।